ओके कि मेरी आवाज आ रही है? कोई है? कैन यू हियर मी? ये बाकी कहाँ गए? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। रोल नंबर 25, वेयर आर द अदर्स? सर वो शिबिर सर की क्लास है अभी शायद, इसीलिए वहीं पे है। भाई 3:30 तो बज गए, 3:30 तो मेरी है ना, टाइम टेबल जो नया बना है। जी सर, उसने शायद एक्स्ट्रा टाइम लिया है इसीलिए। अच्छा ठीक। मैंने ज्वाइन नहीं किया था तो शायद वो इसी में हो गया, शायद उसी मीटिंग में सर। अच्छा अच्छा। ओके सर। कैमरा ऑन करो आप मेरे। ओके, तो जो कंप्लीट नॉर्मल ऑर्थोनॉर्मल सेट्स होते हैं इन अ हिल्बर्ट स्पेस, वो होते हैं द लार्जेस्ट maximal orthonormal sets, and we sometimes call them orthonormal bases. We call this set the orthonormal bases of the Hilbert space. तो हमने जो किया था उसके रिगार्डिंग हमने कुछ इक्विवेलेंसेस की, because it's helpful to have different sort of characterizations of the same principle, because then you can prove any one of them and that would prove the result. Basically हमने ये किया था कि EI is orthonormal, complete orthonormal set if and only if ये ज्यादा important है, अगर कोई वेक्टर है और perpendicular orthogonal to each of these members of the orthonormal set, it would imply that x is equal to 0. Only 0 can be orthogonal to the whole complete orthonormal set. So वो सिर्फ 0 हो सकता है जो हर एक के साथ orthogonal हो, और you can write every x as in its Fourier expansions को मैंने ये कहा था. Now this is true for all x if it is an orthonormal set. Then we have that Parseval's identity, which is an important identity. This is itself a very important idea. इसके basis पे तो पूरी की पूरी मतलब एक branch है mathematics की, Fourier analysis. इसको हमने कहा था Fourier expansion of x. H is our Hilbert space. जाहिर सी बात है हमारा चूंकि इंट्रोडक्टरी कोर्स है फॉर फंक्शन एनालिसिस, हम उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, बट थोड़ा सा हम यहाँ रुकेंगे, जस्ट एक्सप्लोर व्हाट इज हैपनिंग. पूरी ये सीरीज इस तरह से लिखना, एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट जब मैं कह रहा हूँ कि ये इसके बराबर है, तो आई बेसिकली एम ट्राइंग टू से दैट यू नो दिस सम व्हाटएवर इट इज, if it is an infinite sum, then that convergence is in norm. जो ये हिल्बर्ट स्पेस जो कि इनर प्रोडक्ट से जो नॉर्म मिला है, I am trying in some way to say that this thing EI converges to 0. It's not pointwise convergence or an uniform convergence. It is something different than that. It's convergence in the norm of this Hilbert space. Furthermore, I also have this very, very important identity that norm of x square would always be equal to this thing. Now, this would be true if and only if this EI is a complete orthonormal system, and it's the maximal orthonormal set inside H. Otherwise, this would be, of course, this would be greater than equal to, यानी हाँ, इसको हम Bessel's inequality कहते हैं. So now, since जो कि हम आगे पढ़ेंगे, जो separable यानी Hilbert spaces हैं, they are isomorphic to this, isometrically isomorphic to small L2 or capital L2. So we focus, हम जरा इसकी तरफ जाएंगे कि इसको थोड़ा हम एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि जो हमें करना है रीज फिशर थ्योरम, दैट्स अबाउट एलपी स्पेसेस. अब उसके लिए मुझे पहले बताना होगा व्हाट इज एलपी. एलपी स्पेसेस हमने कहीं पे ली, स्मॉल एलपी की pth पावर समेबल सीक्वेंसेस, राइट.
So you've got a sequence x1, x2, so on and so forth, so that xi's are scalars, and summation xi in mod is for p is less than infinity. So these will be p power summable sequences. और जिसमें हमने norm define किया था, norm xp is this summation modulus xi raised to p whole raised to 1 by p. Of course, p is greater than equal to 1 because otherwise it won't be a normal linear space, as triangle inequality would not be satisfied. इसी तरह से big LP space. Now big LP space होता है, we usually write the, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ 0 to pi क्योंकि हम उसी में जाएंगे. It could be actually LPX, where X is the measured space. Measured space means X has a sigma algebra of sets and a measure defined on that sigma algebra of sets, which is a non-negative function that could also be infinite. And of course, then you have the properties. जो तुमने measure theory में तुमने पढ़ा है ना ये? Measure theory का कुछ पढ़ा है तुम लोग पहले वाले सेमेस्टर्स में? डेफिनेटली पढ़ा होगा, कोई ना कोई कोर्स तो आया ही होगा. तुम तो अब किस में होगा? 6th सेमेस्टर में. अच्छा, हम तुमने इसका पढ़ा है कुछ मेजर थ्योरी? मेजर थ्योरी का कुछ पढ़ा है इससे पहले वाले कोर्स में? नो सर, ये हमें इसी सेमेस्टर में है. मेजर थ्योरी? जी सर. ओके, तो हमें कुछ ज्यादा यूज नहीं करना बेसिकली, क्योंकि जो हम लेंगे स्पेसेस उनमें हम मेजर लिबिक, अभी वहां कहाँ पहुंचे हो? लिबिक इंटीग्रल कुछ पहुंचे हो? लिबिक इंटीग्रल पढ़ रहे हो. सो ऑल्दो हमें उतना जाने की, लेकिन हमें ये जो रीज फिशर थ्योरम है ये उसके बगैर जरा मुश्किल है. तो क्या कर सकते हैं, इसमें रीज फिशर थ्योरम है तुम्हारे सिलेबस में. फिर भी मैं देखूंगा जितना भी मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर सकूं वो मैं बताऊं. ओके, मेजरेबल फंक्शंस पढ़ा है? हाँ सर, मेजरेबल फंक्शन पढ़ी. ओके, नाउ व्हाट इज दिस? ये जो LP02 pi है, it is the functions of this type f from, जो भी यहाँ पे सेट आएगा 0 to pi to this scalar field k such that f is measurable and mod f raised to power p is integrable, यानी Lebesgue integral. चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ Lebesgue integral. So that's our, of course again p is greater than equal to 1 and then it is a normed space. थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट करना होगा लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे. So इसका जो नॉर्म है उसको भी हम p to norm करेंगे. इसका norm of any function of this type, p to norm would be integral 0 to 2 pi. एक्चुअली ऐसे नहीं लिखते हम लिबिक इंटीग्रल, बट यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि हम जिन फंक्शंस को लेंगे वो इजी टू हैंडल होंगे. यानी हमारा मतलब है लिबिक इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू मेजर म्यू. इसका जो नॉर्म होगा सम की जगह इंटीग्रल आएगा, यानी यू हैव f of t, लेट मी राइट इट लाइक दिस, रेज्ड टू पावर p t mu whole raised power 1 by p. So this, ये जो ये स्पेस है LP स्पेस, ये बनती है इससे एक Banach स्पेस under this norm. So these are p to power integrable functions that are measurable. So what we are interested in Rees-Fisher theorem. यानी हमें दिखाना है ये एक्चुअली में एक Banach स्पेस है, ये कंप्लीट है. उसकी वजह ये है, अगर मैं लूंगा जिसको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, L202 pi जो है is an Hilbert space,
और इनर प्रोडक्ट स्पेस लिख देता हूँ मैं अभी के लिए, क्योंकि अभी हमने कंप्लीटनेस इसकी प्रूव बेसिकली नहीं की। इनर प्रोडक्ट स्पेस, सो अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस है, इस पे जो इनर प्रोडक्ट डिफाइंड है, मैंने कहा था इट इज एफ जी इज इक्वल टू of course integral over this interval 0 to pi. Then I had f of t, g of t का conjugate, t mu. This was the inner product over this space. Square integrable functions यानी L2 0 to pi, यहाँ हमारी definition के हिसाब से we just have to, क्योंकि p can be greater than equal to 1 in this definition LP spaces में, p को हम 2 ले सकते हैं। जो हम p को 2 लेंगे we will get the square integrable function. So it's a function defined on this 0 to pi to the field k such that f is measurable and integral ft square dt at d mu over this interval 0 to pi exists. Basically we mean that this is less than infinity. And फिर इस पे जो ये है, तो इसका जो नॉर्म होगा वो होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि इसका नॉर्म अराइजेस फ्रॉम द इनर प्रोडक्ट, वो दिस टाइप होगा, यानी वो होगा ft into ft bar d mu over 0 to pi whole raised power 1 by 2, जो कि है मतलब this would be norm of f2, जो कि इसका pth नॉर्म है जो हमने अभी डिफाइन किया था। ये होगा 0 to 2 pi, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट मॉडुलस का स्क्वायर। मैं यहाँ थोड़ा गलत तरीके से लिख रहा हूँ, क्योंकि इंटीग्रल में हम सेट नीचे यहाँ लिखते हैं 0 to pi। अब चूंकि हम इसको थोड़ा पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि मैंने कहा था अगर मैं ये सीक्वेंस लेता हूँ en where en is equal to I think 1 by root 2 pi e raised power iota nx, where n is 0 plus minus 1 plus minus 2 so on and so forth. मैंने कहा था ये जो en सेट है is an orthonormal set, और हमने प्रूव किया था एक्चुअली इट्स एन orthonormal set in L2 0 2 पर, और यहाँ हमें लेबीक इंटीग्रल की उतनी जरूरत नहीं पड़ी। रीजन ये था कि जो ये फंक्शंस है दे आर रीमान इंटीग्रेबल, तो इनका रीमान इंटीग्रेबल होना हमारे लिए, मैंने सिंपली इसको रीमान इंटीग्रल की तरह इवैल्यूएट किया। So now what I am trying to say is indeed ये जो L2 0 2 pi है, ये जो ENs हैं, जो कि मैं प्रूव नहीं करूंगा अगेन, क्योंकि उसके लिए काफी ज्यादा मेजर थ्योरी और इंटीग्रेबिलिटी जाननी पड़ेगी और वो कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ है, is a complete orthonormal system. It's a complete orthonormal set हम प्रूव कर चुके हैं, complete हम नहीं करेंगे। complete orthonormal set in L2 0, और हमें करना भी नहीं है, हमें थोड़ा इसको किसी और तरीके से देखना है। So it's a complete orthonormal set. So if it is a complete normal set, what does that mean? It means that बहुत सारी चीजें, it means that if f is belongs to L2 0 to pi and f is orthogonal to each of these functions, right? The whole set n runs from minus infinity to infinity. ये जो set है अगर इसके साथ ये ऑर्थोगोनल है, it would imply that f can be equal to 0. लेकिन चूंकि हम इस सेट में है तो यहाँ पे f equal to 0 का मतलब होता है f is equal to 0 almost everywhere. AE का मतलब है जिस सेट पे ये 0 नहीं है तो वहां पे उसका मेजर 0 है। You must have learned about sets of measure 0. इसी तरह से जब मैं कहूंगा कि यहाँ पे f is equal to g, दो फंक्शंस इस स्पेस में बराबर है, तो मेरा मतलब होगा f is equal to g almost everywhere. ये हर जगह अप्लाई होगा इस स्पेस में। ओके, और इनफैक्ट इसको नॉर्म स्पेस तभी हम कह सकते हैं जब हम इस कंडीशन को मान लें कि दो फंक्शंस बराबर हैं, if and only if they are equal almost everywhere.
तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर तो काफी जगह आ गया होगा। इसका ये भी मतलब है कि I can write f as in its Fourier expansion f(en) en n runs from -infinity to infinity। मतलब वही था ना जो फूरियर एक्सपेंशन था हमारे वहां, मैंने वहां कहा था x कैन एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज समेशन x ei अगर ei कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है। सो इट मींस दैट एनी फंक्शन बिलोंगिंग टू L2 कैन बी रिटन लाइक दिस, इसकी फूरियर एक्सपेंशन। And I can write it just to make things easier. I can make it like summation n minus infinity to infinity cn, मैं गलत लिख रहा हूँ, नहीं ठीक है, cn ही है। और इसका ये भी मतलब है ना, फर्दर मोर ये भी मतलब है जो ना पार्सेवल्स आइडेंटिटी, इट्स इक्विवेलेंट टू द फैक्ट दैट समेशन मॉडुलस ऑफ f e n square is equal to norm of f square n runs from -infinity to infinity। तो ये सभी चीजें उस इक्विवेलेंस से हमें मिलेगी जब हम अप्लाई करेंगे इस पर्टिकुलर हिल्बर्ट स्पेस में। इस पर्टिकुलर हिल्बर्ट स्पेस में अब Cn का मतलब ये है, यानी इनको हम बोलते हैं, और मैं लिख सकता हूं समेशन n runs from -infinity to infinity Cn square, Cn modulus का square is equal to norm of h square, where of course Cn is equal to inner product Fen, which is the same as integral। तो मैं एक ही चीज भूल गया, जो इसमें आएगा नंबर 1/2 पाई, मुझे शायद इनर प्रोडक्ट में साथ रखना पड़ेगा जो मैं भूल गया, बट दैट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है 1/2 पाई। ठीक है, हाँ ये फंक्शन, ये डिपेंड करता है ना कि तुम कैसे डिफाइन करो, डजंट मैटर। एक्चुअली इसमें बड़ा बुक्स में क्या बोलते हैं, मतलब अपनी मर्जी से करते हैं, कभी लिखते हैं कभी नहीं लिखते, क्योंकि उससे उतना फर्क बेसिकली नहीं पड़ता, उसको हम हमेशा एडजस्ट कर सकते हैं। एनीवे, तो इनर प्रोडक्ट इसका होगा f of t e raised power minus iota nt dt over 0 to, of course this is the big integrable to d mu, so these are my Fourier coefficients। और मैं ये कह रहा हूँ ये जो Fourier coefficients हैं, मतलब इट्स क्लियर, चलो इसको मैं रिमार्क लिखूंगा, इसको एज ए रिमार्क में हम लिखेंगे रिमार्क clearly if f belongs to L2 0 to pi, and since ये हम प्रूव नहीं करेंगे, मैंने कहा था En n runs from -infinity to infinity, where En is equal to 1/2 pi e raised to power iota nx is a complete orthonormal system, या orthonormal set in L2 0 to pi। We have for every f belonging to L2 0 to pi, I must have L2 0 to pi, f can be written as f is equal to summation f n runs from -infinity to infinity, the Fourier expansion of f, and which can be written as summation n runs from -infinity to infinity c sub n en, where Cn is equal to Fen inner product, which by definition of the inner product would be equal to integral over this 0 to pi, the Levy integrable,
f of t e raised to power minus iota nt t mu. तो इस तरह से होगा the are the Fourier coefficients. ठीक है. Now by Parseval's identity, summation mode of Cn square and runs from minus infinity to infinity is equal to summation and runs from minus infinity to infinity modulus of Fen square is equal to norm of f square. So which implies पहली बात तो ये है कि it is equal to some number, so this series converges. It implies that this series Cn n runs from minus infinity to infinity belongs to small l2. यानी the series of Fourier coefficients, जो numbers यहाँ पे आते हैं, they are square summable क्योंकि एक finite है उसका infinite sum. यानी मैं कह सकता हूँ मतलब or I can say for every f belonging to L2 0 to pi, there exists the sequence Cn. N runs from minus infinity to infinity belonging to small l2 such that f can be written as summation n runs from minus infinity to infinity Cn En. So that's interesting. And for something in this big L2, we have got something in this small L2, a sequence that is square sum. Actually, converse भी true है. वही है हमारा मतलब ना next point. लेकिन उसके लिए हमें चाहिए रीज-फिशर थ्योरम. अब रीज-फिशर थ्योरम के लिए हमें दिखाना है बेसिकली रीज-फिशर थ्योरम. एक्चुअली हम दिखाएंगे LP 0 to pi. एक्चुअली ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. चलो मैं लिख देता हूँ LP mu, and for any measure space is complete, and every Cauchy sequence converges inside this p greater than or equal to 1, of course. It's complete normal linear space. ये हम करते हैं, तो फिर हम वो derive करेंगे. Of course मुझे लिखना चाहिए पहले ही इसको, चलो जैसे लिखा है थ्योरम में 1 less than or equal to p less than infinity, LP is complete. अब proof इसका, now we take Cauchy sequence and show that it converges inside the same space. तो यहाँ डरने की जरूरत नहीं है. It is just p to power summable sequences or an arbitrary p to power integrable functions that are measurable or an arbitrary measure space. जो तुम आगे पढ़ोगे दिक्कत कुछ नहीं है. Consider a Cauchy sequence. In fact, मैं यहाँ उससे मदद मिलेगी. Cauchy sequence Fn in LP मैं 0 2 पे रखूं इसमें. चलो मैंने यहाँ 0 2 पे रखा है तो यहाँ पर भी मैं 0 2 पे रख देता हूँ. चलो मैंने कहा ना उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जस्ट चूंकि मैं एक्चुअली ए बी में भी यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ जो भी मेजर स्पेस है. तो अब चूंकि चलो ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि सिलेबस में तुम्हारे यही दिखाना है. वी हैव टू शो दैट LP 0 to pi is complete. Anyway, p to power integrable functions over the interval 0 to pi. Now to prove the convergence of Fn, it is sufficient to show that a subsequence
of Fn converges to converges in LP 0 to pi, क्योंकि metric space because LP जो है 0 to pi जो है is a normal linear space, therefore a metric space. For metric space में if a Cauchy sequence has a convergent subsequence, then it must converge. Hence, passing to a subsequence if necessary. तो अब मैं एक subsequence दिखाऊंगा. अब देखो, इससे पहले हमने ये टेक्निक यूज की थी जब हमने कोई थ्योरम किया था जिसमें हमने यही आइडिया यूज किया था. अगर मेरे पास कोई Cauchy सीक्वेंस है तो उसका मतलब क्या है कि मेरे पास है F1, F2, तो मैं मिलियन ट्रिलियन पे कहीं जा रहा हूं, तो ये जो, क्योंकि मेरे पास तो इन्फिनिटली मेनी है, F मिलियन, F2 मिलियन, तो जितना मैं इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हूँ Cauchy सीक्वेंस का मतलब उनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो कम होती जा रही है. दे आर कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर जितना हम इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं. So I can always pick my subsequence such that the difference between the, मैं इसमें से एक सबसेट ऐसा ले